We love the trailer, sorry. That's a damn good name, yeah. Promo means trailer, proler, superb. So sorry. We love the trailer, and after seeing the trailer, just want to say, I just love you. Thank you very much. I said it to him even before watching the trailer. Yeah. इसका प्यार जो है अमर है, बहुत पुराना है. आपका नया नया है सोनिका. नहीं, Thank you so मेरा much. भी बहुत पुराना है. ओहो, आप बस इस ट्रोलर के लिए वेट कर रही थी. जी, एक्चुअली. Okay. नहीं, मैंने पहले भी बहुत बार आपको बोला है. I love you. I love you too, सोनिका. Thank you so much. शाहरुख, हमने ट्रेलर देखा. I just want to ask once कि मिस्टर खान इस बार किसके ताले तोड़ने जा रहे हैं? एक्चुअली ये जो फिल्म है ये किसी एक एक्टर के बारे में है ही नहीं. ये ensemble फिल्म है और मैंने ऐसी फिल्म कभी की नहीं है. आई थिंक फारा ने ऐसी नहीं की है और जितने एक्टर्स यहाँ पे हैं शायद उनमें से एक दो को छोड़ के सब ने ऐसी की नहीं है. सो ये जो फिल्म है ये एक्चुअली होप पे है, बिलीफ पे है, अच्छाई पर है और उन लोगों के बारे में है, उनको डेडिकेट की गई है जो 99.9% इस दुनिया में है, जो समझते हैं कि वो लूजर्स हैं, जो हार चुके हैं. लेकिन फारा का ये मानना है और अगर औरत ये मानती है तो मैं भी वही मानता हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी में लूज़ कर चुके हैं, ज़िंदगी आपको एक मौका और ज़रूर देगी जिसमें आपको चांस मिलेगा विनर बनने का. तो ये हम जो ताले वाले तोड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर, स्पेशली जो टूटूस के अंदर हम डांस कर रहे हैं बैले वाला, वो इसलिए ही कर रहे हैं कि कहीं पे ज़िंदगी ने हमें मौका दिया है, उन लूज़र्स को, उन लोगों को होप दी है कि कहीं ना कहीं पर हम अपनी उम्मीद से ज़्यादा ज़िंदगी जी सकें. शाहरुख, मूवी में सब कुछ ट्रेलर में अभी तक हमने सब कुछ देखा. एक्साइटमेंट है, कॉमेडी है, एक्शन है, पर एक चीज़ मिसिंग थी जो मुझे लगी कि शाहरुख खान इज़ अ किंग ऑफ रोमांस का कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिंच मिसिंग वो था. तुम्हारे साथ करूँगा ना पिंच, कुछ तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ पिंच नहीं करूँगा जैसा तुमने कहा, तुम्हारे साथ पॉन्च करूँगा मैं. Shahrukh, that golden streak on your hair behind looks very sexy. Whose idea? All those who stand behind me. But this is Farah's idea. So you ask her about the golden streak. इसको ऐसा कुछ एक है दिल में कि मर्दों को ऐसी golden streak. Not मर्दों को, सिर्फ एक मर्द को. Okay, and then you trotted with the models. Of course, you get tall heroines, but you got tall models too. And who says size does matter? Size doesn't matter. They're all saying it backstage, darling. It matters with you. It doesn't make a difference at all. We are so happy. It doesn't matter. He anyway cuts them down to size soon. सबसे पहले तो मुबारकबाद की इतनी बेहतरीन तरीके से आपने ये पेश किया. 3 मिनट्स some seconds के ट्रेलर हैं. एक एक करके आप बार बार याद दिलाता रहे कि 3 मिनट का है, 3 मिनट का है. सर इसीलिए देखने में मजा आया दो बार. एक एक करके सभी से जानना चाहूँगा कि कभी लाइफ में कोई शरारती चोरियाँ की हैं आप लोगों ने घर में? छिटपुट चोरियाँ. विशाल, अगर आप स्टार्ट करें और शेखर पे ये खत्म. प्रोमो तो नहीं है ना कोई तेरे रेडियो? नहीं बिल्कुल. और म्यूजिक डायरेक्टर से मत पूछा करो कि चोरियाँ की हैं कि नहीं की हैं. तो विवाद No. Jokes apart, I'm just joking and this is not serious. Shekhar, Vishal, please start. Mic दो ना. To be honest, I don't know what you're talking about, bro. I mean, बचपन में कभी कुछ छिटपुट फ्रिज से चुरा लिया या कभी किसी के बैग से या? नहीं यार, कोई चोरी वो ऐसे नहीं की, लेकिन ये जो ताले तोड़ने की बात हो रही है, इंडिया वाले जो है वो किस्मत के ताले तोड़ते हैं. ये हम सब ने किया है. जितने सारे स्टेज पे हैं, everyone has done this. Sorry. आप विवान ने क्या चोरी की पूछते हैं? विवान. इसके बारे में सोचना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. बोल विवान बोल प्लीज. नहीं सच्ची में I can't remember anything right now. Seriously. That's exactly what he used to say before the scene when I asked him to say that. I can't remember anything right now.
पता नहीं, आई डोंट नो. दीपिका, अभी मैं स्टोरी आइडिया बता दूंगी तो पकड़े जाएंगे ना, तो मैं तो चोरी करता ही नहीं, मैं तो. You realize what your question has done, no? Next question, please. My question to you is, there is a rumor that you're doing a double role in the film. Can you tell us about it? after he's lost weight, it's become a single role. Huh? And he's looking fab after losing weight. थैंक यू. मैं बस यही And in कहूँगा the trailer? कि इंग्लिश 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 That इंग्लिश goes without इंग्लिश saying. इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश. See the film. It's great fun. Happy New Year, by the way. Yeah. Thanks. बोल दूँ? Triple role है actually. And it's been a very challenging film, as I keep telling Karuna, our producer. I was always in character, so it's very difficult when you have 3 different characters in a film like this. You have Farah shouting at you, and actually it was written as 4 characters. And I requested Shah Rukh if he would do one of them, and then 6. Yeah, there were actually 6 characters, and then we shared it. So the film was meant to be with Farah thought of it with Shah Rukh, Deepika, and myself. And because I'm such a large-hearted person, you see all these wonderful other actors on stage. I said, "Bhaiya, inhe bhi de do. Let them do one role." So actually, I was meant to do all the roles. So yeah, I might have 8 also. I'm not sure. I don't know what he's talking about. Next question, please. अच्छा, इस फिल्म की कहानी ये क्या कहती है कि इस दिवाली तोड़ेंगे ताले इंडिया वाले. ओके, तो वो ताले ही तोड़ के क्यों? I mean, कुछ और काम कर. You know, Yale locks are in nowadays. No, didn't get it. Okay. ये अब हमने बता दिया, ये पूरी स्टोरी एक दुनिया की सबसे बड़ी चोरी की है. Actually, physical ताला कोई नहीं है इसमें. So, it's just a figure of Mayur. Why do you write such lines, यार? तुझे बोला था कंट्रोवर्सी होगी. तोड़ेंगे ताले इंडिया वाले. बहुत अच्छा नॉनसेंस. नो, एक्चुअली तोड़ेंगे ताले का जो कॉनोटेशन है वो जो है, इट्स लाइक फ्रीडम. हर वो ताला तोड़ना, चाहे वो प्यार का ताला तोड़ना है, ट्रूथ का तोड़ना है, गुर्बत का तोड़ना है, फ्रीडम का तोड़ना है. एंड 6 लूजर्स, जब जिंदगी के अंदर आदमी कामयाब नहीं होता है तो समवेयर डाउन द लाइन उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो सारे बंदिशें, सो ताला इज अ बंदिश जो हमारी जिंदगी में होती है, उसको तोड़कर आदमी सक्सेसफुल. तालियां प्लीज. इतना डीप सोचा है. कितना डीप हो गया मेरा. एंड दीपिका, आपसे भी कि आपके डायलेक्ट पर, आई मीन चेन्नई एक्सप्रेस के बाद फिर से हमें देखना पड़ रहा है कि डिफरेंट डायलेक्ट. फिर से इन्हें देखना पड़ रहा है. नो, आई मीन डिफरेंट है जरूर उससे थोड़ा बहुत. तो ये आइडिया मतलब का था एक. Mike. Basically, your dialect is different in this movie as well, post Chennai Express. Comments on that? Yeah, thank God he didn't say it sounds the same. It's different. I play a Maharashtrian girl, and so obviously that would be different. I hope it sounds correct, and I hope it comes across as a Maharashtrian girl. I think Minama for me was one of the most special characters I've done, and I hope Mohini, and both start with M. So I hope Mohini becomes as special as Minama. Hi, this is Sohail. I'm a freelancer. My question is to Farah and Shah Rukh. Nowadays, where like people are preferring solo hero film, in fact, like such an ensemble cast. How did you manage to एक साथ सबको जमा करना और उन सबके रोल को जस्टिफाई करना है? May I answer this? Please. एक्चुअली ये फिल्म फारा ने नहीं लिखी थी. मैं सच बताता हूँ सोहेल, ये फिल्म सोनू की है. सो सबसे पहले वो, मैं बता रहा हूँ, तो सबसे पहले वो गए विशाल भारद्वाज के पास म्यूज़िक करने के लिए. वो नहीं मिले तो विशाल शेखर ले लिया. उसके बाद वो गए नसीरुद्दीन शाह के पास, उन्होंने मना किया तो विवान शाह ले लिया. फिर वो टाइगर श्रॉफ के पास गए, उसने कहा नहीं मैं ये वाला नहीं करूँगा रोल, तो हमने जैकी श्रॉफ को ले लिया. उसके बाद हम प्रकाश पादुकोण के पास गए, उन्होंने मैं तो फिल्में करता है, इन्होंने कहा तो दीपिका चलेगी यार. उसके बाद हम अमित जी के पास गए, सोनू साहब, उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो नहीं होगा, तो हमने अभिषेक को ले लिया. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जितने भी लोग हैं
यहाँ पर स्टेज के ऊपर सोनू ने ऐसे ही कास्ट किया। साजिद खान के पास ने कहा तो उसने कहा निकल जा, फारा को लेने तो ले ले, तो फारा खान को ले लिया। फाइनली सोनू अरुणा ईरानी के पास गए। जब अरुणा ईरानी नहीं मिली तो उन्होंने बोमन ईरानी को ले लिया। तो ऐसे हम लूजर्स को लेकर ये फिल्म बनाई है। होपफुली हम लूजर्स इतनी मेहनत करेंगे, और जब सारे खानों ने निकाल दिया तो मेरे पास आया ही है, तो मैंने कहा यार हम तो कर ही लेंगे यार। तो ऐसे बनाई है सोहेल यार, बहुत मेहनत से हम लूजर्स ने बनाई है। होपफुली आप लोगों के दिल को पसंद आएगी। छोटी सी पिक्चर है, दुआ कीजिएगा। My question is for Deepika. I would like to ask you, you made your grand debut with Om Shanti Om with none other than Farah Khan. And now after that movie, after being the queen of Bollywood, you're working with her again. So could you share your experience with us? What was different then, new now, something? Nothing has changed. She treats me the same way. I'm as nervous around her. What? Stop laughing, okay? She's just become a superb actress now. No, thank you. No, but really, I think for me, from my side, the experience was absolutely the same. They both treat me like I'm their little, like, like possessive and protective, and always making sure I'm okay and always taking care of me. And as far as performance is concerned, though, she's very good with actresses and in the way that she presents them. But I'm still extremely nervous around her. In fact, on my second day of shoot, somebody came and said, somebody who's worked with me on other films and then worked with me on this one, they said, you're around Farah, you're a little different now. You're very quiet and you're a little reserved. So there you go. My mother's laugh the loudest at this. Hi, Shahrukh. I'm Sasha from Hotyor. A question to you regarding the trailer. I mean, we saw Atlantis there, and you have a home there. So how was it shooting, on your second home, actually? No, I still haven't bought over Atlantis. But after this film, yes, inshallah, I'm going to do that. We all stayed together. To be really honest, we didn't go to the house at all. Oh, we went for the most One night, amazing One evening. rap I was coming party. to it. I was coming to it. Yeah, no, we're coming to it. We spent together in Atlantis. We had this lovely room where we all used to get together. I'll be very honest, this has been an extremely familial, family-like experience. And, we had a great time making this film. We were discovering things. Like you said, Farah, myself, Deepika, we worked together. I worked with most of the actors here. We had such a wonderful time. We stayed together. Only on the last night we went there, and then we kind of partied there. And my house has never been the same again. अब उस घर के अंदर कोई भी नहीं जा सकता. उसको restricted area मान लिया गया है. Yeah, it's completely destroyed right now. So we're waiting for it to be refurbished. And inshallah, when we go for the premiere, it'll be all right, so we can go and party there again. At one point, there were people of 6 different communities in the pool with me. And one was actually trying to touch my feet underwater. Congratulations. But I'd like to ask you, PK generated... Can I ask you something else before Sure, you it's ask me going to be anything about else? my voice? Go No, ahead. no. I know what you're going to ask me about PK also, so we come to the same place. But yeah, is it your normal voice or is it just for me? Mic to de do Ankita ko वापस यार आवाज तो सुनने दो उसकी. Don't. It's okay if she's asking about. I have a terrible throat. I'm sorry. You sound really nice with this throat, yeah. Thank you. I'd like to ask you, PK I may call you to dub for Vivana. Sure, it would be my pleasure. But PK generated quite a buzz with its poster. So I'm going to read back to your poster release. It didn't quite stand out alone when compared to PK. अभी हम भी कर रहे हैं बिना कपड़ों के पोस्टर. सबके सब. I mean, there will be comparisons made considering Amir Khan भी ताले तोड़ रहे थे धूम 3 के साथ. Kick में सलमान खान ने भी ताले तोड़े. And now you are also, आप भी ताले तोड़ रहे हैं. So there will be comparison. How are you going to deal with those? I don't deal with comparisons, Vikram. I'll be very honest. The lady asked, आपका poster, इसका poster, उनका poster उनका है, हमारा poster हमारा है, हमारी film हमारी है. और खुशी यही होगी कि जितनी खुशी उनकी film में, किसी और actor की film में, किसी और actress की film में, हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं. Between us, I think we must be knowing all the actors well enough to wish them well and wish ourselves well. There is no comparison. Comparison is in the minds of people who want to compare. And to be really honest, I was writing today that the competition happens with your last job, with your last work, to make your tomorrow
or today better than what you did yesterday. If you're going to be competing with others, it's never going to work. It's the job of people who do not believe in themselves when they compare themselves to others. हमारी अपनी limitation है, हमें उतना ही आता है, हमें जितना आता है उसके अंदर आपे में रह के अपनी मेहनत करते रहें, वही अच्छा है. अभी किससे क्या compare करेंगे यार? And having said that, with all honesty and love, I say, I wish every film that comes, because you would like me to say it, so I'll say PK and Kick and every film that comes, even after that, before that, does wonderful business, entertains us more than the business part of it, makes us all happy, and inshallah, ours also moves along parallelly and does the same for everyone. That's it. शाहरुख, एक चीज़ मुझे बताइए, इन दिनों आपकी सारी जो फिल्म्स आती हैं, डेढ़ साल बाद आई है दोस्त, इन दोनों मतलब ऐसे बोला, हर हफ्ते एक पिक्चर आती है मेरी. मतलब वो एक हाँ ठीक है, हाँ बोल. UA होती है, A होती है, ये कौन सी होगी? ए नहीं हुई है, इसकी कौन सी पिक्चर ए हुई है? यू हैव डन अ ए मूवी? वो देख कर आया, तू जो पी कर आया, जो देख कर आया, मुझे मालूम नहीं दोस्त, बट हाँ. मतलब ये UA होगी या क्या होगी? मुझे पता नहीं. नहीं, ये UAE में बनाई गई है. UAE में इसकी शूटिंग हुई है. That is where Sumit UAE होगी. UAE में है. अच्छा, आपने इससे पहले कहा था कि आपकी हर फिल्म में आपकी हीरोइन का नाम सबसे पहले आएगा, तो इस फिल्म में भी ये होगा? जी, विवान का नाम सबसे पहले आ रहा. शाहरुख, जी नमस्कार. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किंग अंकल के बाद शाहरुख के साथ ही आपकी दूसरी फिल्म है. पहले तो चौथा पांच देवदास भी किया. अच्छा, देवदास 1 2 का 4 बिल्कुल. शाहरुख कितने बदले हैं? कंप्लीट तो करने दो. जी, शाहरुख कितने बदले हैं एज सुपरस्टार, और अभी इस फिल्म के निर्माता भी हैं तो? किंग अंकल, अपना रमाडा होटल गोवा. He's had what Sumita's had. हाँ सुमिता जी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ. वो शाहरुख बाबा मेरा छोटा भाई, किंग अंकल में सामने बैठा, अपने आप में खोया हुआ, एक चार्मिंग खूबसूरत स्माइल जो बहुत कम देता था. उसको देख के लगा कि बहुत ही तहजीब, बहुत ही अदब है. कोना पकड़ा, अपना पी रहा था सिगरेट, अपने काम में फोकस कर रहा था. बच्चे को मेरा शायद किया था, टाइगर छोटा था, वो सब किया, खेला. But he's a guy I always tell Tiger to, I said, look at him. He was the guy who played my younger brother. I was playing the main lead, King Uncle, and छोटा मेरा भाई बना. बहुत खूबसूरत गाना गाया था. पर जिस हिसाब से बाबा ने अपनी ज़िंदगी को पकड़ा और लेके आया आज इस मुकाम पर, एक राजा है, किंग है, ये किंग खान जो है हमारा बाबा. सीखो इससे हर बात सीखना चाहिए. नहीं हकीकत है, इसमें अपने दिमाग में डाल, ताली मार के मत निकाल. जो बोल रहा है मैं सही बोल रहा हूँ. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत गहरा है और बहुत मतलब बहुत डीप है. बड़े ऊपर जितना हंसता है, जितना खुश रहता है, जितना दिखाता है, बहुत अकेला है. राजा है ना, ऊपर रहना मतलब भिड़ू, पहाड़ के ऊपर जाके देख. मतलब चोटी बॉटम से ऊपर आया है और वो पकड़ के रखेला है, और आज भी अपने आप को मतलब बादशाह की तरह रखा है. जिस हिसाब से हम सबकी इज्जत करता है. मैं सीनियर हूँ बाबा से, बहुत प्यार दिया है पूरी पिक्चर के अंदर. इतना प्यार दिया मतलब मैंने बहुत सारी पिक्चरें की है बड़ू. इसके बारे में ज़्यादा लाल नहीं करते अपन लोग, मगर है लाल. बहुत ऊंचा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, और ऐसा सब बच्चा बनना चाहिए इसकी तरह. थैंक यू दादा. बड़ू सही है, हकीकत है. कुछ बदला नहीं है, वैसा का वैसे ही है. पहुंच गया बाबा मुकाम अपना ऊपर, वहाँ शुरू किया था किंग अंकल में देखा था कोने में, और आज बाबा उधर है, मगर कुछ बदला नहीं है, वैसा का वैसा ही है. बहुत दिलदार बच्चा है और बहुत अकेला है. आमतौर पर फिल्मों में देखते हैं हम एक्टर का नाम, एक्ट्रेस का नाम, राज है, रोहन है, राहुल है. यहाँ पर चार्ली, नंदू, जैस, और हम देख रहे हैं ट्विटर पे भी आप लोगों ने नाम जो है चेंज किया. ये क्या है? अल्थिया, मयूर.
नहीं एक्चुअली चाली नाम हम लेजी हो गए थे चेंज करने को बिकॉज वी टू राइट सम चाली what will we give his name? I just write some Charlie and then we'll change his name afterwards. But then it got stuck and then we liked it and then we thought it's different for a Hindi movie. और सबके नाम थोड़े थोड़े अलग रखे हमने. बर्मन का जो नाम है टैमी ईरानी मेरे मामा का नाम है वो. So टेम्पटन ईरानी. So that's that. And Abhishek was Nandu Bhide because it had to rhyme with दिमाग में कीड़े. So literally and Mohini actually is from 1 2 3 तेजाब. इनकी दीपिका की एंट्री जो है I wanted 500 men screaming Mohini Mohini so her name came from there and चाली का नाम actually चंद्रमोहन शर्मा है पिक्चर में. और जैग इज जगमोहन प्रकाश और विवान का नाम हमने रायन रखा था लेकिन हमने बोला ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कैथलिक फिल्म होती जा रही है इसलिए हमने उसको रोहन बना दिया. सो दैट्स इट. आई मीन इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू फाइंड लिटिल क्वर्की नेम्स और आजकल लोग एक्सेप्ट भी करते हैं तो वी आर होपिंग दैट वी वांट चार्ली. Yeah, opening Shahrukh, Anand from India Times. We saw quite a lavish and daring stunt on a helipad, few sequences in the promo. So, a lot has been said about the dancing. Is action also an equally big highlight of the film? Well, it looks really nice, whatever we saw in the promo. You know, actually, all the, I keep joking with Farah that, she being a lady, we tease her. That's the only thing we can tease her about. He teases me that I'm a lady first. No, but that's the only thing we joke about, that तेरे को action नहीं आता, तेरे को action नहीं आता. You've got this macho Sonu Sood, you have Abhishek Bachchan, myself, Jagguda, the greatest of he-men all around, and of course Boman, who's last of the action heroes. Last of the action heroes. Deepika herself, actually. So we always keep joking with her. But let me tell you, I worked with some of the finest directors in this country. But if there's a lady who knows aggression and action, or anybody in the world who nobody knows it better than Farah. So there's an amazing amount of action. And I have a great person in charge of my thrills department. If you have followed my last 2 movies, he always gets credit for thrills. Because when I conceive of an action this much, he goes and makes it this much. No, but in this film has a lot more action than her previous 2 films. I think Sonu's introduction itself, which is quite it's really, really nice. My introduction, the heist itself being so thrilling and active, and it forms a major part of the film. I think it's beautifully conceived and shot by Farah. I think we changed our style of action. There's no guns this time because my son doesn't like guns. Yeah. So Zar, there's no guns in the movie for you. And Abhishek will tell you about the action also. Yeah. I've noticed we've asked a lot of questions about various departments of the film. But essentially, this film is about family. And I'm not saying that it's a family film, but it's about the family of people that today are sitting in front of you and the thousands that have worked behind the scenes. About 2.5 years ago, Shahrukh, Farah and myself were sitting and we were discussing the film. And I remember 2 things that Shahrukh told me. It was late in the night. If any of you have ever had a meeting with Shahrukh, you know that that's when his meeting starts. Late in the night, and he said the first thing is, I want to make India's biggest film. I don't care about the money it makes, it should look like the biggest film. And I think everybody on this dais today will agree after seeing the trailer that I think we've come somewhere close to that. Secondly, he said, we have to concentrate on how we behave offset. Because if offset were a team and we're a family, that'll show in the film. And that's exactly how we behaved. I mean, we were asked about Dubai and whose house we stayed in. Pretty much we slept in one room almost, because we were all together. We used to pack up, everybody used to be in Shahrukh's room playing video games or playing some I game. went and slept in my own room, I swear. That's what I'm a married lady with children. her mother and mother-in-law are here, so we have to say that. But it really, man, it was like, I mean, it sounds so cliched, but the kind of camaraderie that this entire team, from the ADs to the lightmen to the actors to everybody shared, is unbelievable. And I really do believe, I've also done a lot of films, I believe that camaraderie always shows and translates to celluloid. Although Manush will disagree because we shot digitally, not on celluloid. But that's what the film is about. This film is about, like the promo says, it's about a group of people.
And that's been the most important thing. And entire credit to that has to go to these two sitting over here, which are Farah and Shah Rukh. You know, it takes a lot. And we haven't said this today, and I think it's our duty to say it, but it takes a lot for somebody of Shah Rukh's stature and ability, and not only about position, to agree to do a film like this, where actually he has spent 90% of his energy pushing all of us in front. Tum log aage jao. You saw this evening also on the ramp, he was pushing everybody ahead. It takes a lot, and it means the world to all of us. And that's what this film is about. This film is about all of us working together towards a common goal. It's not about action or just there's no romance or there is romance and there's comedy. It's about a group of people trying to achieve their dreams, like Shah Rukh said. And you know, Tod De Tale, it's not that. It's about going out there and just entertaining. We've made the quintessential Bollywood masala film. And I tell Farabi all the time that this is a film Manmohan Desai would have been proud of. This is what this film is. Thank you, everyone. Thank you everyone for being so kind. Everyone at the back also, everybody who's come from all over India. Thank you for being kind to our film. And inshallah, as we go along, we'll show you more bits. I'd personally like to thank all the actors, the actress, the director, our music directors, people who are in the audience today. Kanika has just walked in, who's done a song for us. Everybody who's present here, whose names I may not have remembered. Thank you for making this dream come true. All the ADs also, everyone. You know, there's so many departments, I forget the names. You know I have a problem with names. But I love you, and inshallah, this film will be something, like Abhishek said, it's a quintessential Bollywood film. When people say in picture में revenge होता है, action होता है, dance होता है, drama होता है, हाँ सब कुछ है, और डंके की चोट पर है. और अगर इसको खाड़ सको तो खाड़ लो, ऐसी की तैसी तुम्हारी है. This is a Bollywood film. And if I may just add, I'm really sorry, but you know, the gentleman asked about, you know, will we be able to compete with Hollywood? Please let me tell you, sir, with immense pride I say, after they see this film, they'll be competing with us. This is the Indian film industry. We're the biggest and best film industry in the world, and let them start competing with us now. And the last words will be only of the man who makes this film most special, that is Jaguda. Vedu ek dusre pe chadna mat bas. Thank you very much, everyone. Have a good night. Thank you very much. Thanks a lot. Don't forget to pick up the Happy New Year goodies on your way out at the registration desk. And also, thank you very much for your patience. So we invite you to join us for tea and refreshments